श्रीजगदम्बिकायै नमः। श्रीमद्देवी भागवतम् महापुराणम् द्वितीयः स्कन्धः अथ षष्ठोऽध्यायः। दुर्वासा का कुंती को अमोघ कामद मंत्र देना। मंत्र के प्रभाव से कन्यावस्था में ही कर्ण का जन्म। कुंती का राजा पांडु से विवाह। श्राप के कारण पांडु का संतानोत्पादन में असमर्थ होना। मंत्र प्रयोग से कुंती और माद्री का पुत्रवती होना। पांडु की मृत्यु और 5 पुत्रों को लेकर कुंती का हस्तिनापुर आना। सूत उवाच एवं सत्यवती तेन वृता संतनुना किल 2 पुत्रौ च तया जातौ मृतौ कालवशादपि व्यासवीर्यात् संजातो धृतराष्ट्रोन्ध एव च मुनिं दृष्ट्वाथ कामिन्या नेत्रसम्मीलने कृते श्वेतरूपा यतो जाता दृष्ट्वा व्यासं नृपात्मजा व्यासकोपात् समुत्पन्ना पाण्डुस्तेन न संशयः। संतोषितस्तया व्यासो दास्या कामकलाविदा विदुरस्तु समुत्पन्नो धर्मांसा सत्यवाक् शुचिः राज्ये संस्थापिता पाण्डु कनीयानपि मन्त्रिभिः अन्धत्वात् धृतराष्ट्रोऽसौ नाधिकारे नियोजितः भीष्मस्यानुमते राज्यं प्राप्ता पाण्डुर्महाबलः विदुरोऽप्यथ मेधावी मन्त्रकार्ये नियोजितः धृतराष्ट्रस्य 2 भार्ये गान्धारी सौबली स्मृता द्वितीया च तथा वैश्या गार्हस्थ्येषु प्रतिष्ठिता पाण्डोरपि तथा पत्न्यौ 2 प्रोक्ते वेदवादिभिः सौरसेनी तथा कुन्ती माद्री च मद्रदेशजा गान्धारी सुसुवे पुत्रा शतं परमशोभनं वैश्याप्येकं सुतं कान्तं युत्सुं सुसुवे प्रियं कुन्ती तो प्रथमं कन्या सूर्यात् कर्णं मनोहरं सुसुवे पितृगे हस्ता पश्चात् पाण्डुपरिग्रहा ऋषय ऊचुः किमेतत् सूतचित्रं त्वं भाससे मुनिषत्तमा जनितश्च सुता पूर्वं पाण्डुना सा विवाहिता सूर्यात् कर्णा कथं जाता कन्यायां वद विस्तरात् कन्या कथं पुनर्जाता पाण्डुना सा विवाहिता। सूत उवाच सूरसेन सुता कुन्ती बालभावे यदा द्विजा कुन्तीभोजेन राज्ञा तो प्रार्थिता कन्यका शुभा कुन्तीभोजेन सा बाला पुत्री तो परिकल्पिता सेवनार्थं तु दीप्तस्य विहिता चारुहासिनी दुर्वासास्तु मुनिः प्राप्तश्चातुर्मास्ये स्थितो द्विजः परिचर्या कृता कुन्त्या मुनिस्तो संजगामः ददौ मंत्रं शुभं तस्य येनाहुतासुरा स्वयं समायाति तथा कामं पूरयिष्यति वाञ्छितं गते मुनौ तथा कुन्ती निश्चयार्थं गृहे स्थिता चिन्तयामास मनसा कंसुरं समचिन्तये उदितश्च तदा भानुस्तया दृष्टो दिवाकरः मन्त्रोच्चार तया कृत्वा चाहु तस्तिग्मगुस्तदा मण्डलान्मानुषं रूपं कृत्वा सर्वातिपेशलम् अवतारत्तदाकाशात् समीपे तत्र मंदिरे दृष्ट्वा देवं समायान्तं कुन्ती भानुं सुविस्मिता वेपमाना रजोदोषं प्राप्ता सद्यस्तु भामिनी कृताञ्जलि स्थिता सूर्यं बभासे चारुलोचना सुप्रीता दर्शनेनाद्य गच्छत्वं निजमण्डलं। सूर्य उवाच आहूतोऽस्मि कथं कुन्ती त्वया मन्त्रबलेन वै न मां भजसि कस्मात् त्वं समाहूय पुरोगतं कामार्तोऽस्म्यसितापाङ्गे भज मां भावसंयुतं मन्त्रेणाधीनतां प्राप्तं क्रीडितुं नयमामिति। कुन्ती उवाच कन्यास्म्यहं तु धर्मज्ञ सर्वसाक्षिन्नमाम्यहं तवाप्यहं न दुर्वाचा कुलकन्यास्मि सुव्रत। सूर्य उवाच लज्जा मे महती चाद्य यदि गच्छाम्यहं वृथा वाच्यतां सर्वदेवानां यास्याम्यत्र न संशयः सप्स्यामि तं द्विजं चाद्य येन मन्त्रा समर्पितः त्वां चापि सुभृशं कुन्ती नो चेन्मां त्वं भजिष्यसि कन्याधर्मास्थिरस्ते स्यान् न ज्ञास्यन्ति जना किल मत्समस्तु तथा पुत्रो भविता ते वरानने। इत्युक्त्वा तरणे कुन्तीं तन्मनस्कां सुलज्जितां भुक्त्वा जगाम देवेशो वरं दत्त्वातिवाञ्छितं गर्भं दधार शुश्रोणे सुगुप्ते मंदिरे स्थिता धात्री वेदप्रिया चैका न माता न जनस्तथा गुप्ता सद्मनिपुत्रस्तु जातश्चाति मनोहरः कवचेनातिरम्येण कुण्डलाभ्यां समन्वितः द्वितीय इव सूर्यस्तो कुमार इव चापरः
करे कृत्वाथ धात्रेयी तामुवाच सुलज्जितां कां चिन्तां करभोरु त्वम् आधत्सेद्य स्थितास्म्यहं मञ्जूषायां सुतं कुन्ती मुञ्चन्ती वाक्यमब्रवीत् किं करोमि सुतार्ताहं त्यजे त्वां प्राणवल्लभं मन्दभाग्या त्यजामि त्वं सर्वलक्षणसंयुतं पातु त्वां सगुणा गुणा भगवती सर्वेश्वरी चाम्बिका स्तन्यं सैव ददातु विश्वजननी कात्यायनी कामदा दृक्षेऽहं मुखपङ्कजं सुललितं प्राणप्रियार्हं कदा त्यक्त्वा त्वां विजने वने रविसुतं दुष्टा तथा स्वैरिणी पूर्वस्मिन्नपि जन्मनि त्रिजगतां माता न चाराधिता नध्यातं पदपङ्कजं सुखकरं देव्या शिवायाश्चिरं तेनाहं सुतदुर्भगास्मि सततं त्यक्त्वा पुनस्त्वां वने तप्स्यामि प्रियपातकं स्मृतवती बुद्ध्या कृतं यत् स्वयं। सूत उवाच इत्युक्त्वा तं सुतं कुन्ती मञ्जूषायां धृतं किल धात्री हस्ते ददौ भीता जनदर्शनतस्तथा स्नात्वा त्रस्ता तदा कुन्ती पितृभीष्मन्युवाससा मञ्जूषा वहमाना च प्राप्ता यदि रथेन वै राधास्तु सूतस्य भार्या वै तया सौ प्रार्थिता सुता कर्णो बोधबलवान् वीरा पालिता सूतसद्मनि कुन्ती विवाहिता कन्या पाण्डुना सा स्वयंवरे माद्री चैवापरा भार्या मद्रराजसुता शुभा मृगयां रम्माणस्तु वने पाण्डुर्महाबलः जघान मृगबुद्ध्या तु रम्माणं मुनिं वने सप्तस्तेन तदा पाण्डुर्मुनिना कुपितेन च स्त्रीसङ्गं यदि कर्तासि तदा ते मरणं ध्रुवम् इति सप्तस्तु मुनिना पाण्डुशोकसमन्वितः त्यक्त्वा राज्यं वने वासं चकार भृशदुःखितः कुन्ती माद्री च भार्ये द्वे जग्मतु सहसङ्गते सेवनार्थं सती धर्मं संसृते मुनिसत्तमा गङ्गातीरे स्थिता पाण्डुर्मुनीनामाश्रमेषु च शृण्वानो धर्मशास्त्राणि चकार दुश्चरं तपः कथायां वर्तमानायां कदाचित् धर्मसंसृतम् अशृणोद्वचनं राजा सुपृष्टं मुनिभासितम् अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे गन्तुं परन्तप येन केनापि पायेन पुत्रस्य जननं चरेत् अंसजा पुत्रिका पुत्रा क्षेत्रजो गोलकस्तथा कुंडा सहोडा कानीना क्रीता प्राप्तस्तथा वने दत्ता केनापि चासक्तौ धनग्राहि सुता स्मृता उत्तरोत्तरता पुत्रा निकृष्टा इति निश्चयः। इत्याकर्ण्य तदा प्राह कुन्तीं कमललोचनां सुतमुत्पादयासु त्वं मुनिं गत्वा तपोन्वितं ममाज्ञया न दोषस्ते पुरा राज्ञा महात्मना वसिष्ठा जनिता पुत्रा सौदासेनेति मे श्रुतं तं कुन्ती वचनं प्राह मम मन्त्रोऽस्ति कामदः दत्तो दुर्वाससा पूर्वं सिद्धिदा सर्वथा प्रभो निमन्त्रेऽहं यं देवं मन्त्रेणानेन पार्थिव आगच्छे सर्वथा सौ वै मम पार्श्वं निमन्त्रितः भर्तुर्वाक्येन सा तत्र स्मृत्वा धर्मं सुरोत्तमं संगम्य सुसुभे पुत्रं प्रथमं च युधिष्ठिरं वायुर्भृकोदरं पुत्रं जिष्णुं चैव शतक्रतो वर्षे वर्षे त्रया पुत्रा कुन्त्या जाता महाबला माद्री प्रापतिं पाण्डुं पुत्रं मे कुरुसत्तमा किं करोमि महाराज दुःखं नाशय मे प्रभो प्रार्थिता पतिना कुन्ती ददौ मन्त्रं दयान्विता एकपुत्रप्रबन्धेन माद्रीपतिमते स्थिता स्मृत्वा तदाश्विनौ देवौ मद्रराजसुतासुतौ नकुला स देवश्च सुसुवे वरवर्णिनी एवं ते पाण्डवा पञ्च क्षेत्रोत्पन्नासुरात्मजा वर्षवर्षान्तरे जाता वने तस्मिन् द्विजोत्तमा एकस्मिन् समये पाण्डुर्माद्री दृष्ट्वाथ निर्जने आश्रमे चाति कामार्तो जग्राहागतवैशसः मामेति बहुधा निषिद्धोऽपि तया भृशम् आलिलिङ्गप्रियां दैवात् पपात धरणीतले यथा वृक्षगता वल्ली छिन्ने पतति वै द्रुमे तथा सा पतिता बाला कुर्वन्ति रोदनं बहु प्रत्यागता तदा कुन्ती रुदति बालकास्तथा मुनयश्च महाभागा श्रुत्वा कोलाहलं तदा मृता पाण्डुस्तदा सर्वे मुनयः संसितभृता सहाग्निभिर्विधिं कृत्वा गङ्गातीरे तदा दहन् चक्रे सहैव गमनं माद्री दत्त्वा सुतौ शिशु कुन्त्यै धर्मं पुरस्कृत्य सतीनां सत्यकामतः जलदानादिकं कृत्वा मुनयस्तत्र
वासिनः पंचपुत्रयुतां कुन्ती मनयन् हस्तिनापुरं तां प्राप्तां च समाज्ञाय गाङ्गेयो विदुरस्तथा नगरीं धृतराष्ट्रस्य सर्वे तत्र समाययुः पप्रच्छुश्च जनाः सर्वे कस्य पुत्रा वरानने पाण्डवशापं समाज्ञाय कुन्ती दुःखान्विता तदा तानुवाच सुराणां वै पुत्रा कुरुकुलोद्भवा विश्वासार्थं समाहूता कुन्त्या सर्वे सुरास्तदा आगत्य खेतदात्तैस्तु कथितं न सुता किल भीष्मेण सत्कृतं वाक्यं देवानां सत्कृता सुता गता नागपुरं सर्वे तानादाय सुतान् वधूं भीष्मादया प्रीतिचित्ता पालयामासुरर्थतः एवं पार्था समुत्पन्ना गाङ्गेये नाथ पालिता। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रं संहितां द्वितीय स्कंदे युधिष्ठिरादीनामुत्पत्ति वर्णनम नाम षष्ठः। अथ सप्तमः धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर से दुर्योधन के पिंडदान हेतु धन मांगना। भीमसेन का प्रतिरोध। धृतराष्ट्र गांधारी कुंती विदुर और संजय का वन के लिए प्रस्थान। वनवासी धृतराष्ट्र तथा माता कुंती से मिलने के लिए युधिष्ठिर का भाइयों के साथ वनगमन। विदुर का महाप्रयाण। धृतराष्ट्र सहित पांडवों का व्यास जी के आश्रम पर आना। देवी की कृपा से व्यास जी द्वारा महाभारत युद्ध में मरे कौरवों पांडवों के परिजनों को बुला देना। सूत उवाच पंचानां द्रौपदी भार्या सामान्या सा पतिव्रता पंचपुत्रास्तु तस्यासुर्भर्तृभ्यो तीवदुःसुन्दराः अर्जुनस्य तथा भार्या कृष्णस्य भगिनी शुभा सुभद्राया हृता पूर्वं जिष्णुना हरिसम्मते तस्यां जातो महावीरो नेतो सौरणाजिरे अभिमन्युर्हतास्तत्र द्रौपद्याश्च सुता किल अभिमन्योर्वरा भार्या वैराटे चातिसुन्दरी कुलान्ते सुसुवे पुत्रं मृतो बाणाग्निना शिशुः जीविता स तु कृष्णेन भागिनेय सुता स्वयं द्रौणिबाणाग्निर्दग्धा प्रतापेनाद्भुतेन च परीक्षीणेषु वंशेषु जातो यस्माद्वरा सुता तस्मात् परीक्षितो नाम विख्याता पृथ्वीतले निहतेषु च पुत्रेषु धृतराष्ट्रोऽति दुःखितः तस्थौ पाण्डवराज्ये च भीमबाणपीडितः गान्धारी च तथा तिष्ठत् पुत्रशोकातुराभृशं सेवां तयोर्दिवारात्रं चकारार्तो युधिष्ठिरः विदुरोऽप्यति धर्मात्मा प्रज्ञानेत्रमबोधयत् युधिष्ठिरस्यानुमते भ्रातृपार्श्वे वितिष्ठत धर्मपुत्रोऽपि धर्मात्मा चकार सेवनं पितुः पुत्रशोकोद्भवं दुःखं तस्य विस्मारयन्निव यथा शृणोति वृद्धोऽसौ तथा भीमोऽतिरोषितः वाग्बाणेनाहनत्तं तु श्रावयन् संस्थिता जनान् मया पुत्रा हता सर्वे दुष्टस्यान्धस्य ते रणे दुःशासनस्य रुधिरं पीतं हृद्यं तथा भृशं भुनक्तिपिण्डमन्धोऽयं मया दत्तं गतत्रपः ध्वाङ्क्षवद्वासुवच्चापि वृथा जीवत्यसौ जनः एवं विधानि रुक्षाणि श्रावयत्यनुवासरम् आश्वासयति धर्मात्मा मूर्खो यमिति च ब्रुवन् अष्टादशैव वर्षाणि स्थित्वा तत्रैव दुःखितः धृतराष्ट्रो वने यानं प्रार्थयामास धर्मजम् अयाचत् धर्मपुत्रं धृतराष्ट्रो महीपतिः पुत्रेभ्योऽहं ददाम्यद्य निर्वापं विधिपूर्वकं वृकोदरेण सर्वेषां कृतमत्रौर्ध्वदैहिकम् न कृतं मम पुत्राणां पूर्ववैरमनुस्मरन् ददासि चेद्वनं धनं मह्यं कृत्वा चैवोर्ध्वदैहिकं गमिष्येऽहं वनं तप्तुं तपा स्वर्गफलप्रदम् एकान्ते विदुरेणोक्तो राजा धर्मसुता शुचिः धनं दातुं मनश्चक्रे धृतराष्ट्राय चार्थिने समाहूय निजान् सर्वान् उवाच पृथिवीपतिः धनं दास्ये महाभागा पित्रे निर्वापकामिने तच्छ्रुत्वा वचनं भ्रातुर्ज्येष्ठस्यामिति तेजसा संग्रहेष्य महाबाहुर्मारुति कुपितो ब्रवीत् धनं देयं महाभागा दुर्योधनहिताय किम् अन्धोऽपि सुखमाप्नोति मूर्खत्वं किमता परम् तव
विराट भवने वासा प्रसादात् तव सुब्रत दासस्त्वं च कृतं सर्वैर्मत्स्यस्यामितविक्रमैः देविता त्वं न चेज्येष्ठा प्रभवेत् संक्षया कथं सूपकारो विराटस्य हत्वा भुवं तुमागधं बृहन्नला कथं जिष्णुर्भवेत् बालस्य नर्तकः कृत्वा वेशं महाबाहुर्योत्साया वासवात्मजः गाण्डीवशोभितौ हस्तौ कृतौ कङ्कणशोभितौ मानुषं च वपौ प्राप्य किं दुःखं स्यादता परं दृष्ट्वा वेणीं कृतां मूर्ध्नि कज्जलं लोचने तथा असिं गृहीत्वा तरसा छेद्म्यहं नान्यथा सुखम् अपृष्ट्वा च महीपालं निक्षिप्तोऽग्निर्मया गृहे दग्धुकामश्च पापात्मा निर्दग्धोऽसौ पुरोचनः कीचका निहता सर्वे त्वां पृष्ट्वा जनाधिप न तथा निहता सर्वे च भार्या धृतराष्ट्रजा मूर्खत्वं तव राजेन्द्र गन्धर्वेभ्यश्च मोचिताः दुर्योधनादया कामं तत्रवो निगडीकृता दुर्योधनहितायाद्य धनं दातुं त्वमिच्छसि नाहं ददे महीपाल सर्वथा प्रेरितस्त्वया इत्युक्त्वा निर्गते भीमे त्रिभिः परिभृतो नृपा ददौ वित्तं सुबहुलं धृतराष्ट्राय धर्मजः कारयामास विधिवत् पुत्राणां च ऊर्ध्वदैहिकं ददौ दानानि विप्रेभ्यो धृतराष्ट्रोऽम्बिकासुतः कृत्वौर्ध्वदैहिकं सर्वं गान्धारी सहितो नृपः प्रविवेश वनं तूर्णं कुन्त्या च विदुरेण च सज्जयेन परिज्ञातो निर्गतोऽसौ महामते पुत्रैर्निवार्यमाणापि शूरसेनसुता गता बिलपन् भीमसेनोऽपि तथान्ये चापि कौरवा गङ्गातीरात् परावृत्य ययुः सर्वे गजाह्वयं ते गत्वा जाह्नवीतीरे सतयूपाश्रमं शुभं कृत्वा तृणैकुटिं तत्र तपस्ते पुसमाहिता गतान्यब्दानि षट्तेषां यदा याता हितापसा युधिष्ठिरस्तु विरहादनुजानिदमब्रवीत् स्वप्ने दृष्टा मया कुन्ती दुर्बला वनसंस्थिता मनो मे जायते द्रष्टुं मातरं पितरौ तथा विदुरं च महात्मानं संजयं च महामतिं रोचते यदि वा सर्वान् व्रजाम इति मे मते ततस्ते भ्रातरा सर्वे सुभद्रा द्रौपदी तथा वैराटी च महाभागा तथा नागरिको जनः प्राप्ता सर्वजनैः सार्धं पाण्डवा दर्शनोत्सुका सतयूपाश्रमं प्राप्य ददृशो सर्व एव ते विदुरो न यदा दृष्टो धर्मस्थं पृष्टमास्तदा क्वास्ते स विदुरो धीमास्तमुवाचाम्बिकासुतः विरक्तश्चरते छत्ता निरीहो निष्परिग्रह कुतोऽप्येकान्तसंवासी ध्यायतेऽन्ता सनातनम् गंगा गच्छन् द्वितीये निवने राजा युधिष्ठिरः ददर्श विदुरं चापमं तपसा संसितव्रतं दृष्टुवाच महीपालो वन्देऽहं त्वां युधिष्ठिरः तस्थौ श्रुत्वा च विदुरास्थाणुभूत इवानघः क्षणेन विदुरस्यान्निःसृतं तेज अद्भुतं लीनं युधिष्ठिरस्यास्य धर्मात्सत्त्वात् परस्परं छत्ता जहौ तदा प्राणान् क्षुषोचाति युधिष्ठिरः दाहार्थं तस्य देहस्य कृतवानुद्यमं नृपः शृण्वतस्तु तदा राज्ञो वागुवाचा शरीरिणे विरक्तोऽयं न दाहार्हो यथेष्टं गच्छ भूपते श्रुत्वा ते भ्रातरा सर्वे सस्नुर्गङ्गाजले स्मले गत्वा निवेदयामासु धृतराष्ट्राय विस्तरात् स्थितास्तत्राश्रमे सर्वे पाण्डवा नागरैः सह तत्र सत्यवती सूनुर्नारदश्च समागता मुनियोऽन्ये महात्मानश्चागता धर्मनन्दनं कुन्ती प्रातदा व्यासं संस्थितं शुभदर्शनं कृष्णकर्णस्तु पुत्रो मे जात मात्रस्तु वीक्षिता मनो मे तप्यतेत्यर्थं दर्शयस्व तपोधन समर्थोऽसि महाभागा कुरु मे वाञ्छितं प्रभो गान्धार्युवाच दुर्योधनो रणे गच्छद्वीक्षितो न मया मुने तं दर्शय मुनिश्रेष्ठ पुत्रं मे त्वं सहानुजं सुभद्रोवाच अभिमन्युं महावीरं प्राणादप्यधिकं प्रियं दृष्टुकामास्मि सर्वज्ञ दर्शयाद्य तपोधन सूत उवाच एवं विधानि वाक्यानि श्रुत्वा सत्यवती सुता प्राणायामं तथा कृत्वा दध्यौ देवीं सनातनीं सन्ध्याकालेऽथ सम्प्राप्ते गंगायां मुनिसत्तमा सर्वांस्तांश्च समाहूय युधिष्ठिरपुरोगमान् तुष्टाव विश्वजननीं स्नात्वा पुण्यसरिज्जले प्रकृतिं पुरुषारामां सगुणां निर्गुणां तथा देवदेवीं ब्रह्मरूपां मणिद्वीपाधिवासिनीं
यदा न वेदा न च विष्णुरीश्वरो न वासवो नैव जलाधिपस्तथा न वित्तपो नैव यमश्च पावकस्तदासि देवी त्वमहं नमामि ताम्। जलं न वायुर्न धरा न चाम्बरं गुणा न तेषां च न चेन्द्रियाण्यहं मनो न बुद्धिर्न च तिग्मगोससे तदासि देवी त्वमहं नमामि ताम्। इमं जीवलोकं समाधाय चित्ते गुणैर्लिङ्गकोशं च नीत्वा समाधौ स्थिता कल्पकालं न यस्यात्मतन्त्रा न कोऽप्यस्ति वेत्ता विवेकं गतोऽपि। प्रार्थयत्येष मां लोको मृतानां दर्शनं पुनः नाहं चमोऽस्मि मातस्त्वं दर्शयासु जनान् मृतान्। सूत उवाच एवं स्तुता तदा देवी माया श्रीभुवनेश्वरी स्वर्गादाहूय सर्वान् वै दर्शयामास पार्थिवान्। दृष्ट्वा कुन्ती च गान्धारी सुभद्रा च विराटजा पाण्डवा मुमुदु सर्वे वीक्ष्य प्रत्यागतान् सुखान्। पुनर्विसर्जितास्तेन व्यासेनामित तेजसा स्मृत्वा देवीं महामायामिन्द्रजालमिवोद्यतम्। तदा पृष्ट्वायुः सर्वे पाण्डवा मुनयस्तथा राजा नागपुरं प्राप्ता कुर्वन् व्यासकथां पथि। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां द्वितीयस्कन्धे पाण्डवानां कथानकं मृतानां दर्शनवर्णनं नाम सप्तमः अथाष्टमः। धृतराष्ट्र आदि का दावाग्नि में जल जाना, प्रभास क्षेत्र में यादवों का परस्पर युद्ध और संहार, कृष्ण और बलराम का परम धाम गमन, परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों का हिमालय पर्वत पर जाना, परीक्षित को शाप की प्राप्ति, प्रमदवरा और रुरु का वृत्तांत। सूत उवाच ततो दिने तृतीये च धृतराष्ट्रः स भूपतिः दावाग्निना वने दग्धा स भार्या कुन्ती संयुता। संजयस्तीर्थयात्रायां गतस्त्यक्त्वा महीपतिं श्रुत्वा युधिष्ठिरो राजा नारदात् दुःखमाप्तवान्। षट्त्रिंशत्गते वर्षे कौरवाणां क्षयात् पुनः प्रभासे यादवा सर्वे विप्रशापाक्षयं गता। तेऽपि त्वामदिरां मत्वा कृत्वा युद्धं परस्परं क्षयं प्राप्ता महात्मानः पश्यतो रामकृष्णयो। देहं तत्याज रामस्तु कृष्णाकमललोचनः व्याधबाणः तासापं पालयन् भगवान् हरे। वसुदेवस्तु तच्छ्रुत्वा देहत्यागं हरेरथ जहौ प्राणान् शुचीन् कृत्वा चित्ते श्रीभुवनेश्वरीं। अर्जुनस्तु ततो गत्वा प्रभासे चाति दुःखितः संस्कारं तत्र सर्वेषां यथा योग्यं चकारः। समीक्षातः हरिर्देहं कृत्वा काष्ठस्य सञ्चयम् अष्टाभिः पत्नीभिर्दाहयामास पार्थिवः। देहं रामस्य रेवत्या स दग्धा विभावसौ अर्जुनो द्वारिकामेत्य पुरान् निष्क्रामयज्जनम्। पुरीशा वासुदेवस्य प्लावितो दधिना तथा अर्जुना सर्वलोकान् वै गृहीत्वा निर्गतस्तदा। कृष्णपत्न्यस्तदा मार्गे चौरार्भिरैश्चलुण्ठिताः धनं सर्वं गृहीतं च निस्तेजश्चार्जुनोऽभवत्। इन्द्रप्रस्थे समागत्य वज्रो राजा कृतस्तदा अनिरुद्धसुतो नाम्ना पार्थेनामित तेजसा। व्यासाय कथितं दुःखं तेनोक्तोऽसौ महारथा। पुनर्यदा हरिस्त्वञ्च भवितासि महामते तदा तेजस्तु तवात्युग्रं भविष्यति पुनर्युगे। तच्छ्रुत्वा वचनं पार्थो गत्वा नागपुरेऽर्जुना दुःखितो धर्मराजानं वृत्तान्तं सर्वमब्रवीत्। देहत्यागं हरे श्रुत्वा यादवानां क्षयं तथा गमनाय मतिं चक्रे राजा हिमाचलं प्रति। षट्त्रिंशद्वार्षिकं राज्ये स्थापयित्वोत्तरासुतं निर्जगामवनं राजा द्रौपद्या भ्रातृभिः सह। षट्त्रिंशच्चैव वर्षाणि कृत्वा राज्यं गजाह्वे गत्वा हिमाचले षट्ते जहुः प्राणान् पृथा सुता। परीक्षिदपि राजर्षि प्रजा सर्वा सुधार्मिकः अपालयच्च राजेन्द्रः षष्टिवर्षाण्यतन्द्रितः। बभूव मृगयाशीलो जगाम च वनं महत् विद्धं मृगं विचिन्वानो मध्याह्ने भूपति स्वयं। त्रिस्तश्च परिश्रान्ता क्षुदितश्चोत्तरासुतः। राजा धर्मेण संतप्तो ददर्श मुनिमन्तिके ध्याने स्थितं मुनिं राजा जलं पप्रच्छ चातुरा। नोवाच किञ्चिन्मौनस्थश्चुकोप नृपतिस्तदा मृतं सर्पं तदादाय धनुष्कोट्या त्रिशातुरा। कलिनाभीष्टचित्तस्तु कण्ठे तस्य निवेशयत्
आरोपिते तथा सर्पेणोवाच मुनिसत्तमा न च चालसमाधिस्थो राजापि स्वगृहं गतः तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी गविजातो महातपा महासक्तोऽथ शुश्राव क्रीडमानो वनान्तिके मित्राण्याहुश्च तत्पुत्रं पितुकण्ठे तवाधुना लम्बितोऽस्ति मृता सर्पः केनापि तद्मुनीश्वरा तेषां तद्वचनं श्रुत्वा चुकोपातिशयं तदा सशाप नृपतिं क्रुद्धो गृहीत्वा सूकरे जलं पितुकण्ठेद्य मे येन विनिक्षिप्तो मृतो रगः तक्षका सप्तरात्रेण तं दशेत् पापपूरुषं मुने शिष्योऽथ राजानं समुत्पेत्य गृहस्थितं शापं निवेदयामास मुनिपुत्रेण चार्पितम् अभिमन्युसुता श्रुत्वा शापं दत्तं द्विजेन वै अनिवार्यं च विज्ञाय मन्त्रिवृद्धानुवाचः सप्तोऽहं द्विजरूपेण मम देशाद्संशयं किं विधेयं मया मात्या उपायश्चिन्तयामिह मृत्युकिलानिवार्योऽसौ वदन्ति वेदवादिनः यत्नस्तथापि शास्त्रोक्ता कर्तव्या सर्वथा बुधै उपायवादिना केचित् प्रवदन्ति मनीषिणः विज्ञोपायेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि नेतरस्य च मणिमन्त्रौषधीनां वै प्रभावा खलु दुर्विधा न भवेदिति किं तैस्तु मणिमद्भिः साधितये सर्पदष्टा पुरा भार्या मुने सञ्जीवितामृता दत्त्वार्धमायुस्सस्तेन मुनिना स वराप्सरा भवितव्येन विश्वासा कर्तव्या सर्वथा बुधै प्रत्यक्षं तत्र दृष्टान्तं पश्यन्तो सचिवा किल दिवि कोऽपि पृथिव्यां वा दृश्यते पुरुषा क्वचित् दैवे मतिं समाधाय यस्तिष्ठेत्तु निरुद्यमः विरक्तस्तु यतिर्भूत्वा भिक्षार्थं याति सर्वथा गृहस्थानां गृहे काममाहूतो वाथवान्यथा यदृक्षयोपपन्नं च क्षिप्तं केनापि वा मुखे उद्यमेन विना चास्यादुदरे संविशेत् कथं प्रयत्नश्चोद्यमे कार्यो यदा सिद्धिं न याति चेत् तदा दैवं स्थितं चेति चित्तमालां वयेद्बुधा मन्त्रिण ऊचुः को मुनिर्येन दत्त्वार्धमायुषो जीविता प्रिया कथं मृता महाराज तन्नो ब्रूहि सविस्तरं राजोवाच भृगोर्भार्या वरारोहा पुलोमा नाम सुन्दरी तस्यां तु च्यवनो नाम मुनिर्जातोऽति विस्तृतः च्यवनस्य च शर्याते सुकन्या नाम सुन्दरी तस्यां यज्ञे सुता श्रीमान् प्रमतिर्नाम विश्रुतः प्रमतेस्तु प्रिया भार्या प्रतापे नाम विश्रुता रूरुर्नाम सुतो जातस्तथा परमतापसः तस्मिंश्च समये कश्चित् स्थूलकेशश्च विश्रुतः बभूव तपसा युक्तो धर्मात्मा सत्यसम्मतः एतस्मिन्नन्तरे मान्या मेनका च वराप्सरा क्रीडां चक्रे नदीतीरे त्रिषु लोकेषु सुन्दरी गर्भं विश्वावसो प्राप्य निर्गता वरवर्णिनी स्थूलकेशाश्रमे गत्वा विसर्ज वराप्सरा कन्यकां च नदीतीरे त्रिषु लोकेषु सुन्दरीम् दृष्ट्वा नाथां तदा कन्यां जग्राह मुनिसत्तमा पुपोष स्थूलकेशस्थो नाम्ना चक्रे प्रमद्वरां साकाले यौवनं प्राप्ता सर्वलक्षणसंयुता रूरुर्दृष्ट्वाथ तां बालां कामबाणार्दितो ह्यभूत्। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रनाम संहितां द्वितीय स्कंधे रूरुचरित्रवर्णनं नामाष्टमः। अथ नवमः। सर्प के काटने से प्रमद्वरा की मृत्यु, रूरु द्वारा अपनी आधी आयु देकर उसे जीवित कराना, मणिमंत्र औषधि द्वारा सुरक्षित राजा परीक्षित का 7 तल वाले भवन में निवास करना। परीक्षित उवाच कामार्ता समुनिर्गत्वा रूरु सुप्तो निजाश्रमे पिता पप्रच्छदेनं तं किं रुरो विमना असि स तमाहाति कामार्ता स्थूलकेशस्य चाश्रमे कन्या प्रमद्वरा नाम सा मे भार्या भवेदिति स गत्वा प्रमतिस्तूर्णं स्थूलकेशं महामुनिं प्रमुह्य सुमुखं कृत्वा ययाचेताम्बराननां ददौ वाचं स्थूलकेशा प्रदास्यामि शुभे हनि विवाहार्थं च संभारं रचयामास तुर्वने प्रमते स्थूलकेशश्च विवाहार्थं समुद्यतौ बभूवतुर्महात्मानौ समीपस्थौ तपोवने तस्मिन्नवसरे कन्या रम्माणा गृहाङ्गणे प्रसुप्तं पन्नगं पादे नास्पृशच्चारुलोचना
दष्टातोपन्नगेनाथ साममार वरांगना कोलाहलस्तदा जातो मृतां दृष्ट्वा प्रमद्वरां मिलिता मुनयः सर्वे चुक्रुशोशोकसंयुता भौमौ तां पतितां दृष्ट्वा पिता तस्याति दुःखितः रुरोध विगतप्राणां दीप्यमानां सुतेजसा रुरु श्रुत्वा तदा क्रन्दं दर्शनार्थं समागतः ददर्श पतितां तत्र सजीवामिव कामिनीं रुदन्तं स्थूलकेशं च दृष्ट्वान्या नृसिसत्तमान् रुरुस्थानात् बहिर्गत्वा रुरोध विरहाकुला अहो दैवेन सर्पोऽयं प्रेषिता परमाद्भुता मम शर्म विघाताय दुःखहेतुरयं किल किं करोमि कु गच्छामि मृता मे प्राणवल्लभा न वै जीवितुमिच्छामि वियुक्ता प्रियानया नालिङ्गिता वरारोहा न मया चुम्बिता मुखे न पाणिग्रहणं प्राप्तं मन्दभाग्येन सर्वथा लाजा होमस्तथा चाग्नौ न कृतस्तुनया सह मानुष्यं दिगिदं कामं गच्छन्त्वद्य ममासवः दुःखितस्य न वा मृत्युर्वाञ्छिता समुपैतिः सुखं तर्हि कथं दिव्यमाप्यते भुवाञ्छितं प्रपतामि हृदे घोरे पावके प्रपताम्यहं विषमद्मि गले पाशं कृत्वा प्राणस्त्यजाम्यहं विलप्यैवं रुरुस्तत्र विचार्य मनसा पुनः उपायं चिन्तयामास स्थितस्तस्मिन् नदीतटे मरणात् किं फलं मे स्यात् आत्महत्या दुरत्यया दुःखितश्च पिता मे स्यात् जननी चाति दुःखिता दैवस्तुष्टो भवेत् कामं दृष्ट्वा मां त्यक्तजीवितं सर्वाप्रमुदितश्च स्यान् मच्छयेनात्र संशया उपकारा प्रियाया का परलोके भवेदपि मृते मय्यात्मघातेन विरहात् पीडितेऽपि च परलोके प्रिया सापि न मे स्यादात्मघातिनः एतदर्थं मृते दोषा मयि नैवामृते पुनः। विमृश्यैवं रुरुस्तत्र स्नात्वा चम्य शुचिस्थितः अब्रवीद्वचनं कृत्वा जलं पाणावसौ मुनिः यन्मया सुकृतं किञ्चित् कृतं देवार्चनादिकं गुरुवा पूजिता भक्त्या हुतं जप्तं तपाकृतम् अधीतास्त्वखिला वेदा गायत्री संस्कृता यदि रविराराधितस्तेन संजीवतु मम प्रिया यदि जीवेन्न मे कान्ता त्यजे प्राणानहं ततः इत्युक्त्वा तज्जलं भूमौ चिक्षेपाराध्य देवता राजोवाच किं बिलपतस्तस्य भार्यया दुःखितस्य च देवदूतस्तदाभ्येत्य वाक्यमाहरुरुं ततः देवदूत उवाच माकार्षेषाः सम्ब्रह्मन् कथं जीवेन्मृता प्रिया गतायुरेषा शुश्रोणे गन्धर्वाप्सरसो सुता अन्यां कामय चार्वङ्ग्यं मृतेयं चाभिवाहिता किं रोदसी सुदुर्बुद्धे का प्रीतिस्तेनयां सह रुरु उवाच देवदूत न चान्यां वै वरिष्याम्यहं मङ्गनाम् यदि जीवेन्न जीवेद्वा मर्तव्यं चाधुना मया राजोवाच विदित्वेति हठं तस्य देवदूतो मुदान्वितः उवाच वचनं तथ्यं सत्यं चाति मनोहरम् उपायं शृणु विप्रेन्द्र विहितं यत्सुरैः पुरा आयुषोर्ध्वप्रदानेन जीवया सुप्रमद्वरां रुरुवाच आयुषोर्ध्वं प्रयच्छामि कन्यायै नात्र संशयः अद्य प्रत्यावृतप्राणा प्रोत्तिष्ठतु मम प्रिया विश्वावसुस्तदा तत्र विमानेन समागतः ज्ञात्वा पुत्रीं मृतां चासु स्वर्गलोकात् प्रमद्वरां ततो गन्धर्वराजश्च देवदूतश्च सत्तमः धर्मराजमुपेतेदं वचनं प्रत्यभासतां धर्मराजरुरोपत्नी सुता विश्वावसोस्तथा मृता प्रमद्वरा कन्या दष्टा सर्पेण चाधुना सारुरुरायुषूर्धेन मर्तुकामस्य सूर्यज समुत्तिष्ठस्तु तन्वङ्गे वृतचर्या प्रभावतः धर्म उवाच विश्वावसुसुतां कन्यां देवदूत यदीक्षसि उत्तिष्ठित्वायुषूर्धेन रुरुं गत्वा त्वमर्पय राजोवाच एवमुक्तस्ततो गत्वा जीवयित्वा प्रमद्वरां रुरो समर्पयामास देवदूतस्तुरान्वितः तथा सुवेन्ये विधिना रुरुणापि विवाहिता इत्थं चोपाय्य योगेन मृता प्युज्जीविता तदा उपायस्तु प्रकर्तव्या सर्वथा शास्त्रसम्मतः मणिमन्त्रौषधिभिश्च विधिवत् प्राणरक्षणे इत्युक्त्वा सचिवान् राजा कल्पयित्वा सुरक्षकान् कारयित्वाथ प्रासादं सप्तभूमिकमुत्तमम्
आरुरोहोत्तरासोनो सचिवैः स तत्क्षणं मणिमन्त्रधरासुरा स्थापितास्तत्र रक्षणे प्रेषयामास भूपालो मुनिं गौरमुखं तथा प्रसादार्थं सेवकस्य क्षमस्वेति पुनः पुनः ब्राह्मणान् सिद्धमन्त्रज्ञान रक्षणार्थमितस्ततः मन्त्रिपूतास्थितस्तत्र स्थापयामास दन्तिनः न कश्चिद्दारुहेत्तत्र प्रासादे चातिरक्षिते। वातोऽपि न चरेत्तत्र प्रवेशे विनिवार्यते भक्ष्यभोच्यादिकं राजा तत्रस्थश्च चकारसः स्नानसन्ध्यादिकं कर्म तत्रैव विनिवर्त्य च राजकार्याणि सर्वाणि तत्रस्थश्चाकरो नृपः मन्त्रिवेश सम्मन्त्रगणयन् दिविशानपि कश्चिच्च कश्यपो नाम ब्राह्मणो मन्त्रिसत्तमः शुश्राव च तथा शापं प्राप्तं राज्ञा महात्मना स धनार्थे द्विजश्रेष्ठा कश्यपा समचिन्तयत् व्रजामि तत्र यत्रास्ते सप्तो राजा द्विजेनः इति कृत्वा मतिं विप्रा स्वगृहान्निःसृतात् पथि कश्यपो मन्त्रविद्वान् धनार्थे मुनिसत्तमः। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां द्वितीय स्कन्धे परीक्षित राज्ञो गुप्त गृहे वास वर्णनम नाम नवमः अथ दशमः। महाराज परीक्षित को डसने के लिए तक्षक का प्रस्थान। मार्ग में मंत्रवेता कश्यप से भेंट। तक्षक का एक वटवृक्ष को डसकर भस्म कर देना और कश्यप का उसे पुनः हरा भरा कर देना। तक्षक द्वारा धन देकर कश्यप को वापस कर देना। सर्पदंश से राजा परीक्षित की मृत्यु। सूत उवाच तस्मिन्नेव दिने नाम्ना तक्षकस्तं नृपोत्तमं सप्तं ज्ञात्वा महागृहात्तूर्णं निःसृतं पुरुषोत्तमः वृद्धब्राह्मणवेषेण तक्षकापथि निर्गता अपश्यत् कश्यपं मार्गे व्रजन्तं नृपतिं प्रति तमपृच्छन् पन्नगोऽसौ ब्राह्मणं मन्त्रवादिनं को भवास्त्वरितो याति किञ्च कार्यं चिकीर्षति। कश्यप उवाच परीक्षितं नृपश्रेष्ठ तक्षकश्च प्रधक्षति तत्राहं त्वरितो यामि नृपं कर्तुमपज्वरं मन्त्रोऽस्तेमं विप्रेन्द्र विशनासः करा किल जीवयिष्याम्यहं तं वै जीवितव्येधुना किल। तक्षक उवाच अहं सपन्नगो ब्रह्मस्तं दक्ष्यामि महीपतिं निवर्तयस्व न सक्तस्त्वं मया दष्टं चिकित्सितुं। कश्यप उवाच अहं दष्टं त्वया सर्प नृपं सप्तं द्विजेन वै जीवयिष्याम्य सन्देहं कामं मन्त्रबलेन वै। तक्षक उवाच यदि त्वं जीवितुं यासि मया दष्टं नृपोत्तमं मन्त्रशक्तिबलं विप्र दर्शयत्वं मया ममानघ दक्ष्याम्येनं च निग्रोधं विषदष्ट्राभिरद्य वै। कश्यप उवाच जीवयिष्ये त्वया दष्टं दग्धं वा पन्नगोत्तम। सूत उवाच अदसत्पन्नगो वृक्षं भस्मसात् च चकारतम्। उवाच कश्यपं भूयो जीवयैनं द्विजोत्तम दृष्ट्वा भस्मीकृतं वृक्षं पन्नगेन विषाग्निना सर्वं भस्म समाहृत्य कश्यपो वाक्यमब्रवीत् पश्य मन्त्रबलं मेद्य न क्रोधं पन्नगोत्तम जीवयाम्यद्य वृक्षं वै पश्यतस्ते महाविष। इत्युक्त्वा जलमादाय कश्यपो मन्त्रवित्तमः शिशे च भस्मराशिं तं मन्त्रितेनैव वारिणा तद्वारिशे च नाज्जातो निक्रोधा पूर्ववक्षुवा। विस्मयं तक्षका प्राप्तो दृष्ट्वा तं जीवितं नगं तमाह कश्यपं नागा किमर्थं ते परिश्रमः सम्पादयामि तं कामं ब्रूहित्वाडववाञ्छितं। कश्यप उवाच वित्तार्थे नृपतिं मत्वा सप्तं पन्नगनिःसृतः गृहादहं चोपकर्तुं विद्यया नृपसत्तमम्। तक्षक उवाच वित्तं गृहाण विप्रेन्द्र यावदीक्षसि पार्थिवात् ददामि स्वगृहं याहि सकामोऽहं भवाम्यतः। सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कश्यपः परमार्थवित् चिन्तयामास मनसा किं करोमि पुनः पुनः धनं गृहीत्वा स्वगृहं प्रयामि यद्यहं पुनः भविष्यति न मे कीर्तिर्लोके लोभसमाश्रयात् जीवितेतन प्रश्रेष्ठे कीर्ति स्यादचला मम धनप्राप्तिश्च बहुधा भवेत् पुण्यं च जीवनात् रक्षणीयं यशा कामं दिग्धनं यस्सा विना सर्वस्वं रघुणा पूर्वं दत्तं विप्राय कीर्तये हरिश्चन्द्रेण कर्णेन कीर्त्यर्थं बहुविस्तरम् उपेक्षेयं कथं भूपं दह्यमानं विषाग्निना जीवितेद्य मया राज्ञे सुखं सर्वजनस्य च अराजके प्रजानाशो भविता नात्र संशयः प्रजानाशाय पापं मे भविष्यति मृते नृपे अपकीर्तिश्च लोकेषु धनलोभात् भविष्यति इति संचिन्त्य मनसा ध्यानं कृत्वा स कश्यपः
गतायुशासनपतिं ज्ञातवान् बुद्धिमत्तरः आसन् न मृत्युं राजानं ज्ञात्वा ध्यानेन कश्यपः गृहं येष धर्मात्मा धनमादाय तक्षकात् निवर्त्य कश्यपं सर्पा सप्तमे दिवसे नृपं हन्तु कामो जगामासु नगरं नागसाह्वयं शुश्रावनगरस्यान्ते प्रासादस्थं परीक्षितं मणिमन्त्रौषधैकामं रक्ष्यमाणमतन्द्रितम् चिन्ताविष्टस्तदा नागो विप्रशापभयाकुला चिन्तयामास योगेन प्रविशेयं गृहं कथं वञ्चयामि कथं चैनं राजानं पापकारिणं विप्रशापाद्धतं मूढं विप्रपीडाकरं शठं पाण्डवानां कुले जाता कोऽपि नैतादृशो भवेत् तापसस्य गले येन मृता सर्पो निवेशिता कृत्वा विगर्हितं कर्म जानन् कालगतिं नृपः रक्षकान् भवने कृत्वा प्रासादमभिगम्य च मृत्युं वञ्चयते राजा वर्ततेऽद्य निराकुला तं कथं दक्षयिष्यामि विप्रवाक्येन चोदिता न जानातेन मन्दात्मा मरणं ह्यनिवर्तनं तेनासौ रक्षकान् स्थाप्य सौधारूढोद्यमोदते यदि वै भीतो मृत्युर्दैवेनामित तेजसा स कथं परिवर्तेत कृतैर्यत्नैस्तु कोटिभिः पाण्डवस्य च दायादौ जानन् मृत्युं गतं नृपः जीवने मतिमास्ताय स्थितास्थाने निराकुला दानपुण्यादिकं राजा कर्तुमर्हति सर्वथा सर्वेण हन्यते व्याधिर् येनायु शाश्वतं भवेत् नोचन्मृत्युर्विधिं कृत्वा स्नानदानादिका क्रिया मरणं स्वर्गलोकाय नरकायान्यथा भवेत् द्विजपीडाकृतं पापं पृथग्वास्य च भूपते विप्रशापस्तथा घोरा आसन्ने मरणे किल न कोऽपि ब्राह्मणा पार्श्वे येनं प्रतिबोधयेत् वेदसावेतो मृत्युरनिवार्यस्तु सर्वथा इति संचिन्त्य सर्पोऽसौ स्वान्नागान् निकटे स्थितान् कृत्वा तापसवेशांस्तान् प्राहिणोत् सुभुजङ्गमान् फलमूलादिकं गृह्य राज्ञेनागोथ तक्षका स्वयं च कीटरूपेण फलमध्ये ससारः निर्गतास्ते तदा नागा फलान्यादाय सत्वरा ते राजभवनं प्राप्य स्थिता प्रासादसन्निधौ रक्षकास्तापसान् दृष्ट्वा पप्रक्षुस्तच्चिकीर्षितम् ऊचुस्ते भूपतिं दृष्टो प्राप्ता स्मोद्य तपोवनात् अभिमन्यु सुतं वीरं कुलार्कं चारुदर्शनं परिवर्धयितुं प्राप्ता मन्त्रैरार्थर्वणैस्तथा निवेदयध्वं राजानं दर्शनार्थागतान् मुनीन् कृत्वा विषेकान्यास्यामो दत्त्वामिष्टफलानि च भारतानां कुले क्वापि न दृष्टा द्वाररक्षका न श्रुतं तापसानां तु राज्ञो सन्दर्शनं किल आरोहामो वयं तत्र यत्र राजा परीक्षिता आशीर्भिर्वर्धयित्वैनं दत्ताज्ञा प्रव्रजामहे सूत उवाच इत्याकर्णवचस्तेषां तापसानां तु रक्षका प्रत्युचुस्तान् द्विजान्मत्वा निदेशं भूपतेर्यथा नाद्यवो दर्शनं विप्राराज्ञा स्यादिति नो मतिः स्वसर्वतापसैरत्र त्वागन्तव्यं नृपालये अनारोहस्तु प्रासादो विप्राणां मुनिषत्तमा विप्रशापभयाद्राज्ञा विहितोऽस्ति न संशयः तदोचुस्तानतो विप्रा फलमूलजलानि च विप्राशिषश्च राज्ञेथ ग्राहयन्तु सुरक्षका ते गत्वा नृपतिं प्रोचुः तापसा नागताञ्जना राजोवाचानयध्वं वै फलमूलादिकं च यत् पृच्छध्वं तापसान् कार्यं प्रातरागमनं पुनः प्रणामं कथयध्वं मे नाद्य सन्दर्शनं मम ते गत्वा समादाय फलमूलादिकं च यत् राज्ञे समर्पयामासुर्बहुमानः पुरासरं गतेषु तेषु नागेषु विप्रवेशाभृतेषु च फलान्यादाय राजासौ सचिवानिदमब्रवीत् श्रोधो भक्षयन्त्वद्य फलान्येतानि सर्वसा अद्म्यहं चैकमेतद्वै फलं विप्रार्पितं महत् इत्युक्त्वा तत्फलं दत्त्वा श्रोतभ्योश्चोत्तरासुतः करे कृत्वा फलं पक्वं ददार नृपति स्वयं विदारितं फलं राज्ञा तत्र क्रमीरभूधनुः स कृष्णनयनस्ताम्रो दृष्टो भूपतिना स्वयं तं दृष्ट्वा नृपति प्राह सचिवान् विस्मिता नथ अस्तमभ्येति सविता विषादद्य न मे भयम् अंगीकरोमि तं शापं क्रमिको मां दशत्वयम् एवमुक्त्वा स राजेन्द्रो ग्रीवायां सन्न्यवेशयत् अस्तं याते दिवानाते धृता कण्ठेत कीटका तक्षकस्तु तदा जाता कालरूपी भयानका राजा संवेष्टितस्तेन दष्टश्चापि महीपतिः मन्त्रिणो विस्मयं प्राप्ता
भृशदुःखिता घोररूपमहिं वीक्ष्य दुद्रुवुस्ते भयार्दिता चुक्रुषु रक्षका सर्वे हाहाकारो महानभूत्। वेष्टितो भोगि भोगेन विनष्ट बहुपौरुषा नोवाच नृपते किंचन न चचालोत्तरा सुतः उत्थिताग्निशिखा घोरा विसजा तक्षकाननात् प्रज्ज्वालनपं त्वासु गतप्राणं चकारः हत्वासु जीवितं राज्ञस्तक्षको गगने गतः जगद्दग्धं तु कुर्वाणं ददृशुस्तं जना इह सपपातगतप्राणो राजा दग्ध इव द्रुमः चुक्रुषुश्च जना सर्वे मृतं दृष्ट्वा नराधिपम्। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां द्वितीय स्कंधे परीक्षिन्मरणं नाम दशमः अथैकादशः। जन्मेजय का राजा बनना और उत्तंक की प्रेरणा से सर्प सत्र करना। आस्तिक के कहने से राजा द्वारा सर्प सत्र रोकना। सूत उवाच गतप्राणं तु राजानं बलं पुत्रं समीक्ष्य च चुक्रुश्च मंत्रिणा सर्वे परलोकस्य सत्क्रिया गंगातीरे दग्धदेहं भस्मप्रायं महीपतिम् अगुरुभिश्चाभियुक्तायां चितायां मध्यरोपयन् दुर्मरणे मृतस्यास्य चक्रुश्चैवोर्ध्वदैहिकीं क्रियां पुरोहितास्तस्य वेदमन्त्रैर्विधानता ददुर्दानानि विप्रेभ्यो गात्सुवर्णं यथोचितम् अन्नं बहुविधं तत्र वस्त्राणि विविधानि च सुमुहूर्ते सुतं बालं प्रजानां प्रीतिवर्धनं सिंहासने शुभे तत्र मन्त्रिणा सन्निवेशयन् पौराजानपदालोकाश्चक्रुस्तं नृपतिं शिशुं जनमे जयनामानं राजलक्षणसंयुतं दात्रेयी शिक्षयामास राजचिह्नानि सर्वसा दिने दिने वर्धमाना च बभूव महामते प्राप्ते चैकादशे वर्षे तस्मै कुलपुरोहिता यथोचितां ददौ विद्यां जग्राह स यथोचितां धनुर्वेदं कृपापूर्णं ददावस्मै सुसंस्कृतम् अर्जुनाय यथा द्रोणाकर्णाय भार्गवो यथा सम्प्राप्तविद्यो बलवान् बभूव दुरतिक्रमः धनुर्वेदे तथा वेदे पारगा परमार्थवित् धर्मशास्त्रार्थकुशला सत्यवादी जितेन्द्रिया चकार राज्यं धर्मात्मा पुरा धर्मसुतो यथा तथा सुवर्णवर्माख्यो राजा काशीपति किल वपुष्टमां शुभां कन्यां ददौ पारीक्षिताय च सतां प्राप्यासि तापाङ्गीं मुमुदे जनमेजया काशीराजसुतां कन्यां प्राप्य राजा यथा पुरा विचित्रवीर्यो मुमुदे सुभद्रां च यथार्जुना विजहार महीपालो वनेषु उपवनेषु च तया कमलपत्राक्षा सच्चा सत्क्रतुर्यथा प्रजास्तस्य सुसंतुष्टा बभूवो सुखलालिता मंत्रिणा कर्मकुशला चक्रु कार्याणि सर्वशः। एतस्मिन्नेव काले तु मुनिरुक्तङ्कनामकः तक्षकेण परिक्लिष्टो हस्तिनापुरमभ्यगात् वैरस्यापचितिं कोस्य प्रकुर्यादिति चिन्तयन् परीक्षितसुतं मत्वा तं नृपं सम्पागता कार्याकार्यं न जानासि समये नृपसत्तमा अकर्तव्यं करोष्यद्य कर्तव्यं न करोषि वै किं तां सम्प्रार्थयाम्यद्य गतामरसं निरुद्यमम् अवैरग्यमतन्त्रज्ञं बालचेष्टासमन्वितं। जन्मेजय उवाच किं वैरं न मया ज्ञातं न किं प्रतिकृतं मया तद्वद्त्वं महाभाग करोमि यदनन्तरम्। उत्तङ्क उवाच पिता तेनेतो भूप तक्षकेण दुरात्मना मंत्रिणस्त्वं समाहूय प्रक्षस्व पितृणासनं। सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं राजा पप्रच्छ मन्त्रिसत्तमान् ऊचुस्ते द्विजशापेन दष्टा सर्पेण वै मृता। जन्मेजय उवाच शापोत्रकारणं राज्ञा सप्तस्य मुनिना किल तक्षकस्य तु को दोषो ब्रूहि मे मुनिषत्तमा। उत्तङ्क उवाच तक्षकेण धनं दत्त्वा कश्यपा सन्निवारिता न स किं तक्षको वैरी पितृहा तव भूपते भार्यारूरो पुरा भूपा दृष्टा सर्पेण सा मृता अविवाहिता तु मुनिना जीविता च पुनः प्रिया रुरूणापि कृता तत्र प्रतिज्ञा चातिदारुणा यं यं सर्पं प्रपश्यामि तं तं हन्म्यायुधेन वै। एवं कृत्वा प्रतिज्ञां च शस्त्रपाणिरुरुस्तदा व्यचरत् पृथिवीं राजन् निघ्नसर्पान्यतस्ततः एकदा सवने घोरं डुण्डुभं जर्षान्वितम् अपश्यद्दण्डमुद्यम्य हन्तुं तं सम्पाययौ अभ्यहनृष्टो विप्रस्तमुवाचाथ डुण्डुभः नापराध्नोमि ते विप्र कस्मान्मामभिहंसि वै। रुरुवाच प्राणप्रिया मे दयिता दष्टा सर्पेण सा मृता
प्रतिज्ञेयं तदा सर्प दुःखितेन मया कृता। डुण्डुब उवाच नाहं दशामि तेऽन्ये वै ये दशन्ति भुजङ्गमा शरीरसमयोगेन न मां हिंसितुमर्हसि। उत्तङ्कुवाच श्रुत्वा तां मानुषीं वाणीं सर्पेणोक्तां मनोहरां रुरूपप्रक्षकोषित्वं कस्मात् डुण्डुभतां गतः। सर्पुवाच ब्राह्मणोऽहं पुरा विप्रसकामे खगमाविधा विप्रो धर्मभृतां श्रेष्ठा सत्यवादी जितेन्द्रिया समया वञ्चितो मौर्ख्यात् सर्पं कृत्वा च तारणकं भयं च प्रापितोत्यर्थमग्निहोत्र गृहे स्थितः तेन भीतेन सप्तोऽहं विह्वलेनातिवेपिना भवसर्पो मन्दबुद्धेनाहं दर्शितस्त्वया मया प्रसादितोऽर्थं सर्पेणासौ द्विजोत्तमा मामुवाचात तत्क्रोधात् किञ्चित् क्षान्तिमवाप्य च रुरुस्ते मोचिता सापस्यास्य सर्प भविष्यति प्रमतेस्तु सुतो नूनामिति मां सोऽब्रवीद्वचा सोऽहं सर्पो रुरुस्त्वं च शृणु मे परमं वचः। अहिंसा परमो धर्मो विप्राणां नात्र संशयः दया सर्वत्र कर्तव्या ब्राह्मणे न विजानता यज्ञादन्यत्र विप्रेन्द्र न हिंसा याज्ञिकी मता। उत्तङ्कुवाच सर्पयोनिर्विमुक्तो ब्राह्मणो सौरुरुस्ततः कृत्वा तस्य च शापान्तं परित्यक्तं च हिंसनं विवाहिता तेन बालामृता सञ्जीविता पुनः कदनं सर्वसर्पाणां कृतं वैरमनुस्मरन् तं तु वैरं समुत्सृज्य वर्तसे पन्नगेष्वथ विमन्युर्भरतश्रेष्ठ पितृघातकरेषु वै अंतरिक्षे मृतस्ताता स्नानदानविवर्जिता तस्योद्धारं च राजेन्द्र कुरुहत्वात् पन्नगान् पितुर्वैरं न जानाति जीवन्नेव मृतो हि सः दुर्गतिस्ते पितुस्तावत् यावत्तान्न हनिष्यसि अम्बामखमिषं कृत्वा कुरु यज्ञं नृपोत्तम सर्पसत्रं महाराजा पितुर्वैरमनुस्मरन् श्रुत्वाच इत्यस्य वचः श्रुत्वा राजा जन्मेजयस्तदा नेत्राभ्यामश्रुपातं च चकारातीव दुःखितः दिग्मामस्तु सुदुर्बुद्धिर्वृथा मानकरस्य वै पिता यस्य गतिं घोरां प्राप्ता पन्नगपीडितः अद्याहं मुखमारभ्य करोम्यपचितिं पितुः हत्वा सर्पानसन्दिग्धो दीप्यमाने विभावसौ आहूय मन्त्रिणा सर्वान् राजा वचनमब्रवीत् कुर्वन्तु यज्ञसंभारं यथारं मन्त्रिसत्तमा गङ्गातीरे शुभां भूमिं मापयित्वा द्विजोत्तमैः कुर्वन्तु मण्डपं स्वस्था शतस्तम्भं मनोहरं वेदी यज्ञस्य कर्तव्या ममाद्य सचिवा खलु तदङ्गत्वे विधेयो वै सर्पसत्रासु विस्तरा तक्षकस्तु पशुस्तत्र होतोत्तङ्को महामुनिः शीघ्रमाहूयतां विप्रा सर्वज्ञा वेदपारगा सूतुवाच मन्त्रिणस्तदा चक्रो भूपवाक्यैर्विचक्षणा यज्ञस्य सर्वसंभारं वेदीं यज्ञस्य विस्तृतां हवने वर्तमाने तु सर्पाणां तक्षको गतः इन्द्रं प्रति भयार्तोऽहं त्राहि मामिति चाब्रवीत् भयभीतं समाश्वास्य श्वासने सन्निवेश्य च ददाव भयमत्यर्थं निर्भयो बहुपन्नग तमिन्द्रशरणं ज्ञात्वा मुनिर्दत्ता भयं तथा उत्तङ्कुह्वय दुद्विग्नासेन्द्रं कृत्वा निमन्त्रणं स्मृतस्तदा तक्षकेण ययावरकुलोद्भवा आस्तिको नाम धर्मात्मा जरकारुसुतो मुनिः तत्रागत्य मुनिर्बालस्तुष्टाव जन्मेजयं राजा तमर्चयामास दृष्ट्वा बालं सुपण्डितम् अर्चयित्वा नृपस्तं तु छन्दयामास वाञ्छितैः स तु वप्रे महाभागा यज्ञोऽयं विरमत्विते सत्यबद्धो नृपस्तेन प्रार्थितश्च पुनस्तथा होमं निवर्तयामास सर्पाणां मुनिवाक्यतः भारतं श्रावयामास वैशम्पायनविस्तरात् श्रुत्वापि नृपति कामं न शान्तिमभिजग्मिवान् व्यासं पप्रच्छ भूपालो मम शान्तिं कथं भवेत्। मनोति दह्यते कामं किं करोमि वदस्व मे पिता मे दुर्भगस्यैव मृता पार्थ सुतात्मजा क्षत्रियाणां महाभागा संग्रामे मरणं वरं रणे वा मरणं व्यास गृहे वा विधिपूर्वकं मरणं न पितुर्मे भूद् अन्तरिक्षे मृतो वसः शान्तुपायं वदस्वात्र त्वं च सत्यवती सुता यथा स्वर्गं व्रजेदासु पिता मे दुर्गतिं गतः। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रं संहितां तृतीयस्कन्धे सर्वशत्रुवर्णं नाम एकादशः
अथ द्वादशः आस्तिक मुनि के जन्म की कथा। कद्रु और विनिता द्वारा सूर्य के घड़े के रंग के विषय में शर्त लगाना और विनिता को दासी भाव की प्राप्ति। कद्रु द्वारा अपने पुत्रों को शाप। सूतुवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य व्यासा सत्यवती सुता उवाच वचनं तत्र सभायां नृपतिं च तं। व्यास उवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि पुराणं गुह्यमद्भुतं पुण्यं भागवतं नाम नानाख्यानयुक्तं शिवम् अध्यापितं मया पूर्वं सुताय वै श्रावयामि नृपं त्वां हे रहस्यं परमं मम धर्मार्थकाममोक्षाणां कारणं श्रवणात् किल सुभदं सुखदं नित्यं सर्वागम समद्भुतं। जन्मेजय उवाच आस्तिकोऽयं सुता कस्य विघ्नार्थं कथमागता प्रयोजनं किमत्रास्य सर्पाणां रक्षणे प्रभो कथयैतन्महाभाग विस्तरेण कथानकं पुराणं च तथा सर्वं विस्तराद्वद सुब्रत। व्यास उवाच जरत्कारुर्मुनिः शान्तो न चकार गृहाश्रमं तेन दृष्टा वने गर्ते लम्बमाना सुपूर्वजा ततस्तमाहो कुरुपुत्रदारान्यथा चनास्यात् परमा हि तृप्ते स्वर्गे व्रजामा खलु दुःखमुक्ता वयं सदाचारयुते सुते वै सतानुवाचात लभे समाना मया चितां चातिवसानुगां च तदा गृहारम्भमहं करोमि ब्रवीमि तथ्यं मम पूर्वजा वै इत्युक्त्वा ताञ्जरत्कारुर्गतस्तीर्थान् प्रतिद्विजा तदैव पन्नगा सप्ता मात्राग्नौ निपतन्त्विति कश्यपस्य मुने पत्नौ कद्रुश्च विनिता तथा दृष्ट्वादित्यरथे चाश्वमूर्च्छतुश्च परस्परं तं दृष्ट्वा च तदा कद्रुर्विनितामिदमब्रवीत् किं वर्णोऽयं हयो भद्रे सत्यं प्रब्रूहि मा चिरं। विनितोवाच श्वेत एवास्व राजोऽयं किं वा मत्त्वं मन्यसे शुभे ब्रूहि वर्णं त्वमप्यस्य ततस्तु विपणावहे। कद्रुरुवाच कृष्णवर्णमहं मन्ये हयमेनं शुचिस्मिते एषार्धं मया दत्तं दासी भावाय भामिनी। सूतुवाच कद्रुश्च स्वसुतानाः सर्वान् सर्पान् वशे स्थितान् बालान् क्षयामान् प्रकुर्वन्तु यावतो स्वशरीरके नेति केचन तत्राहुस्तानथासौ सशापः जन्मेजयस्य यज्ञे वै गमिष्यति हुतासनम् अन्ये चक्रुरयं सर्पा कुर्वरं वर्णभोगकै वेष्टयित्वास्य पुक्षं तु मातो प्रेचिकीर्षया भगिन्यौ च सुसंयुक्ते गत्वा ददृशतुरहयं कर्बुरं तं हयं दृष्ट्वा विनिता चाति दुःखिता तदा जगाम गरुणा सुतस्तस्या महाबला स दृष्ट्वा मातरं दीनामपृच्छत्पन्नगासनः माता कथं सुदीनासि रुदितेव विभासि मे जीवमाने मयि सुते तथान्यैर्विसारतौ दुःखितासि ततो वां धिग्जीवितं चारुलोचने किं जातेन सुतेनाथ यदि माता सुदुःखिता संसमे कारणं माता करोषि विगतज्वरां। विनितोवाच सपत्न्यादाशं पुत्र किं ब्रवीमि वृथा क्षता वह मां साब्रवीत्यद्य तेनास्मि दुःखिता सुत। गरुण उवाच वहिष्येऽहं तत्र किल यत्र सा गन्तुमुत्सुका मा शोकं कुरु कल्याणी निश्चिन्तां तां करोम्यहं। व्यास उवाच इत्युक्ता सा गता पार्श्वं कद्रोश्च विनिता तदा दासी भावमपाकर्तुं गरुणोऽपि महाबला उवातां सपुत्रां वै सिन्धो पारं जगामः गत्वा तां करुणा प्राह ब्रूहि मातर्नमोऽस्तु ते कथं मुञ्चेत मे माता दासी भावाद संशयम्। कद्रुरुवाच अमृतं देवलोकात् त्वं बलादानीव मे सुतान् समर्पय सुताद्यासु मातरं मोच या बलां। व्यासुवाच इत्युक्ता प्रेयौ शीघ्रमिन्द्रलोकं महाबला कृत्वा युद्धं जहारासु सुधाकुम्भं खगोत्तमा समानीयामृतं मात्रे वैनतेया समर्पयत् मोचिता विनिता तेन दासी भावाद संशयम् अमृतं संजहारेन्द्र स्नातुं सर्पाय तदा गता दासी भावाद् विनिर्मुक्ता विनिता विपतेर्बलात् तत्रास्तीर्णाकुशास्तैस्तु लीढापन्नग नामकै द्विजिह्वास्ते सुसम्पन्ना कुशाग्रस्पर्शमात्रता मात्रा सप्ताश्चते ये नागा वासुकि प्रमुखासु च ब्रह्माणं शरणं गत्वा तेहोचु शापजं भयं ताना भगवान् ब्रह्मा जरत्कारुर्महामुने वासुकेर्भगिनीं तस्मै अर्पयध्वं सनामिकां तस्यां यो जायते पुत्रा स वस्त्राता भविष्यति आस्तिक इति नामासौ भविता नात्र संशया
वासुकिस्तु तदा कर्ण्य वचनं ब्रह्मणा शिवं वनं गत्वा सुतां तस्मै ददौ विनयपूर्वकम्। सनामां तां मुनिर्ज्ञात्वा जरत्कारुरुवाच तम् अप्रियं मे यदा कुर्यात् तदा मां सन्त्यजाम्यहं। वाग्बन्धं तादृशं कृत्वा मुनिर्जग्राह तां स्वयं दत्त्वा च वासुकी कामं भवनं स्वं जगामः। कृत्वा पर्णकुटीं शुभ्रां जरत्कारुर्महावने तया सा सुखं प्राप्य रम्माणा परन्तप। एकदा भोजनं कृत्वा सुप्तोऽसौ मुनिसत्तमा भगिनी वासुकेस्तत्र संस्थितावरवर्णिने न सम्बोधयितव्योऽहं त्वया कान्ते कथञ्चन। इत्युक्ता तु गतो निद्रां मुनिस्तां सुदतीं तदा रविरस्तगिरिं प्राप्ता सन्ध्याकालोपस्थिते। किं करोमि न मे शान्ति त्यजेन्मां बोधिता पुनः। धर्मलोपभयाद् भीता जरत्कारुरचिन्तयत् नो चेत् प्रबोधयाम्येन सन्ध्याकालो वृथा वृजेत्। धर्मनाशाद्वरं त्यागस्तथापि मरणं ध्रुवं। धर्महानिर्नराणां हि नरकाय भवेत् पुनः। इति संचिन्त्य सा बाला तं मुनिं प्रत्यबोधयत्। सन्ध्याकालोऽपि सञ्जाता उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सुब्रता। उत्थितोऽसौ मुनिः कोपात् तामुवाच वृजाम्यहं त्वं तु भ्रातृगृहं याहि निद्राविच्छेदकारिणे। वेपमाना ब्रवीद्वाक्यमित्युक्ता मुनिना तदा भ्रात्रा दत्तात् यदर्थं तत् कथं स्यादमितप्रभ। मुनिप्राह जरत्कारं तदस्तीति निराकुला। गता सा मुनिना त्यक्ता वासुके सदनं तदा पृष्टा भ्रात्रा ब्रवीद्वाक्यं यथोक्तं पतिना तदा। आस्तीत्युक्ता च हित्वा मां गतोऽसौ मुनिसत्तमा। वासुकिस्तु तदा कर्णं सत्यवाङ्मुनिरित्युत विश्वासं च परं कृत्वा भगिनीं तां समाश्रयात्। तथा कालेन केता जातोऽसौ मुनिबालका आस्तिकिति नामासौ विख्याता कुरुसत्तमा। तेनायं रक्षितो यज्ञस्थौ पार्थिवसत्तमा। मातृपक्षस्य रक्षार्थं मुनिना भावितात्मना भव्यं कृतं महाराज मानितोऽयं त्वया मुनि। ययावरकुलोत्पन्नो वासुकेर्भगिनी सुतः स्वस्थितेस्तु महाबाहो भारतं सकलं श्रुतं। दानानि बहुदत्तानि पूजिता मुनयस्तथा कृतेन सुकृतेनापि न पिता स्वर्गतिं गता। पावितं न कुलं कृष्णं त्वया भूपति सत्तमा। दिव्याश्चायतनं भूप विस्तीर्णं कुरु भक्तिता। येन वै सकला सिद्धिस्तव स्याज्जन मे जय। पूजिता परया भक्त्या शिवा सकलदा सदा। कुलवृद्धिं करोत्येव राज्यं च सुस्थिरं सदा। देवीमखं विधानेन कृत्वा पार्थिवसत्तमा। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं परमं शृणु। त्वामहं श्रावयिष्यामि कथां परमपावनीं संसारतारिणीं दिव्यां नानारसमाहृतां। न श्रोतव्यं परं चास्मात् पुराणाद् विद्यते भुवि। नाराध्यं विद्यते राजन् देवी पादाम्बुजाधृते। ते सभाग्याः कृतप्रज्ञा धन्यास्ते नृपसत्तमा। येषां चित्ते सदा देवी वसति प्रेमसङ्कुले। सुदुःखितास्ते दृश्यन्ते भुवि भारते। नाराधिता महामाया यैर्जनैश्च सदाम्बिका। ब्रह्मादयासुरा सर्वे यदाराधनतत्परा वर्तन्ते सर्वदा राजन्स्तां न सेवेत को जनः। य इदं शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। भगवत्या समाख्यातं विष्णवेदनुत्तमं तेन श्रुतेन ते राजश्चित्ते शान्तिर्भविष्यति। पितॄणां चाक्षया स्वर्गा पुराणश्रवणात् भवेत्। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां द्वितीयस्कन्धे श्रोतृप्रवृत्तिप्रसङ्गो नाम 12। द्वितीयस्कन्धः सम्पूर्णः। श्रीदेव्यार्पणमस्तु। श्रीजगदम्बिकायै नमः। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।